Hello students, so today we are going to start with your chapter number 16, that is digestion and absorption. This chapter it deals with the different parts of the human digestive system and then the mechanism of digestion. So in this video today I am going to discuss about the different parts of the alimentary canal. So before we start with that, first of all we need to understand the term digestion. What is digestion? Digestion means the process of breaking of the complex food particles into simpler absorbable forms is known as digestion. When we are breaking the complex particles into the simpler ones, that is called as digestion. So in humans it is carried out by both mechanical and chemical method. If we talk about the human body, this process is done by both mechanical means like we masticate the food in our mouth, that is a mechanical method, and a chemical method means breakdown with the help of the enzyme. So both the way it is working in our body. Then what is the alimentary canal? First of all we need to understand this. The alimentary canal is mainly referred to as the pathway by which the food enters our body and moves out through the anus after digestion. The complete pathway starting from the intake of the food, that is mouth, up to the exit of the after digestion, that will be the anus. So it is a tube-like structure which starts from the mouth and ends in the anus. Then the alimentary canal play a primary role in the human digestion and is also termed as the digestive tract. We also call it as the digestive tract. Now, the organs of the alimentary canal, we all are aware about the different organs of alimentary canal. The main organs of the alimentary canal are mouth or the oral cavity, esophagus, stomach, small intestine, large intestine. As well as I have taken this diagram intentionally because here the different parts are not labeled. They are marked as 1, 2, 3. So I hope you will be answering which part is 1, 2, 3, 4 and 5. As well as answers are also given over here. So you will have a quick review to the different parts of the alimentary canal. Now, next is the mouth or the oral cavity. So if we say the mouth is the first part of our digestive system, the food is ingested through the mouth. We intake the food through this part. So oral cavity is the cavity which comprises the palate, the tongue and the teeth. So palate, what is palate? That is the roof of our oral cavity, that is called as the palate. Then tongue जो है हमारे पास muscular and glandular freely movable structure attached to the base of the oral cavity by frenulum. अगर हम इसकी बात करें तो ये एक muscular structure है, that you are aware about your tongue. Glandular है क्योंकि इसके ऊपर कुछ glands present होते हैं. देन इट इज़ अटैच टू द बेस ऑफ ओरल कैविटी. आपकी ओरल कैविटी के बेस से ये आप जब अगर टंग को ऊपर उठाते हो, यू विल फाइंड एक अटैचमेंट वहाँ पर आपको मिलती है. दैट अटैचमेंट इज कॉल्ड एज द फ्रेनुलम. देन द अपर पार्ट ऑफ द टंग हैज़ टाइनी प्रोजेक्शंस जिनको हम लिंगुअल पैपिले बोलते हैं. ठीक है, लिंगुअल मीन्स टंग. Then some of these papillae have taste buds and we are aware about the different type of taste buds in the human on the human tongue. Then the important thing is teeth. If we talk about teeth, in case of humans they are diphodont. So diphodont means di means two. So here diphodont term means it is having two set of teeth. We know that human is having two set of teeth. Milk or the deciduous means which will fall off, which will shed off, and the permanent teeth. Fine. If we talk about the structure, it is made up of three parts: the crown, the neck and the root. We all are aware about the structure. The exposed part of the tooth is called as crown. The region which is covered by the gums is the neck, and the root is embedded in the socket of the jaw bone. Now there is another term, that is thecodont. Thecodont means that the teeth are embedded in the socket of the jaw bone. Third important term is heterodont. Heterodont means different type of teeth in humans with their functions. Fine. Like incisors for cutting, canines for tearing, premolars for chopping and molars for grinding and chewing. So for human teeth there are three important terms: diphodont, two set of teeth; thecodont, embedded in the jaw socket; and heterodont, different type of teeth depending upon their functions. Now the next is dental formula.
So if we talk about dental formula represents the number of teeth present in your mouth. So for this dental formula, look at this diagram. This is the upper jaw, sorry, and this is the lower jaw. So for writing the dental formula, we always take the 1/2. Fine. So you can see for this 1/2, we have 2 incisors, 1 canine, 2 premolars, and 3 molars are there. So for writing this dental formula for the permanent teeth, we write it as 2 1 2 3. 2 incisors, 1 canine, 2 premolars, and 3 molars. 2 1 2 3 for the upper jaw, 2 1 2 3 for the lower jaw. 2 incisors, canine, premolars, molars. Fine. As this is for the 1/2 only, so we'll multiply it with 2, and finally the number will be 32 in case of the permanent teeth. If we talk about the milk teeth, in case of milk teeth, there are no premolars and the molars are only 2 in number. So for that, the dental formula is 2 1 2. That means 2 incisors, 1 canine, and 2 molars are there, which will be later on replaced by the permanent teeth in adults. Now, the next part is the pharynx and the esophagus. If we talk about pharynx, this is the common passage for both food and the air. That's why we always suggest while eating, you need not to breathe in. When you are engulfing your food, you need not to speak out, because when you speak out, your windpipe will be open. So there is a chances of that the food will enter in your windpipe. So for that, to avoid the entry of food into the windpipe, there is a epiglottis which prevent the entry of food into the glottis. Now what is glottis? This is the opening of the windpipe. Fine. So you can say the epiglottis is like a door which will close the glottis when we are taking in the food. That means epiglottis close the door of the windpipe, that is glottis, when we are taking in the food. Next is the esophagus. So esophagus is the muscular tube passing posteriorly through the neck, thorax, and the diaphragm, which small bolus of food passing from the mouth to the stomach. So you can see that here this is the food pipe or the esophagus, and it is carrying the bolus. हम पढ़ेंगे ये term when we will discuss about the mechanism of digestion of food. Fine. तो ये हमारा हो गया, that is the esophagus. Then the gastroesophageal sphincter that control the movement of food into the stomach. अगर हम कहें कि जब हमारे esophagus ने stomach में, this is the esophagus and this is the structure of a stomach, जब esophagus ने stomach में खुलना है तो यहाँ पर एक हमारे पास gastroesophageal sphincter होता है जो इसकी opening को क्या करता है, कंट्रोल करता है. ओके. सो नाउ लेट्स विल स्टार्ट अबाउट द स्टमक. अगर हम स्टमक की बात करें तो ये दिस इज़ अ जे शेप्ड मस्कुलर बैग. आप देखो इसकी शेप जे के जैसी है, अल्फ़ाबेट जे लाइक. मस्कुलर बैग है, पोजिशन एट द अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. हमारी एब्डोमिनल डायफ्राम के नीचे वाली कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं. तो ये हमारे अपर लेफ्ट पार्ट में जो है एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड होता है. इट हैज़ 4 मेन पार्ट्स, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड द पाइलोरिक रीजन्स. फाइन. अब इनमें क्या है, अगर हम यहाँ पर देखें तो फर्स्ट रीजन जो है दिस इज़ द कार्डियक रीजन. एज इट इज़ क्लोज टू द हार्ट, तो हम इसलिए इसको कार्डियक रीजन बोलते हैं. और हमने अभी कहा कि जो हमारा ईसोफेगस है, इट इज़ ओपनिंग टू द स्टमक थ्रू दिस गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंस्टर, जो हमारे कार्डियक पार्ट में ही खुलता है. देन द सेकेंड पार्ट इज़ द फंडस. फंडस बेसिकली डोम शेप्ड पार्ट है हमारे स्टमक का, और बेसिकली यहाँ पर जो है एयर हमारी, जिसको हम गैस कहते हैं, जो हमारे स्टमक में गैस भरी रहती है, दैट इज़ प्रेजेंट इन दिस फंडस रीजन ऑफ द स्टमक. नेक्स्ट पार्ट इज़ दी बॉडी पार्ट ऑफ द स्टमक. सो दिस इज़ द स्टमक बॉडी पार्ट, जहाँ पर मेनली हमारा जो डाइजेशन का मेन जो काम है वो यहाँ पर होना है. एंड आफ्टर दैट द लास्ट रीजन इज़ द पाइलोरिक रीजन. पाइलोरिक रीजन वो है जो फर्दर हमारा थ्रू अ पाइलोरिक कैनाल ओपन करेगा इनटू द डिओडिनम. डिओडिनम इज़ अ पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, देन इट विल ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. अगेन यहाँ पर भी एक स्पिंस्टर प्रेजेंट है, दिस इज़ कॉल्ड एज द पाइलोरिक स्पिंस्टर. तो 2 स्पिंस्टर आ गए हमारे, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंस्टर एंड द पाइलोरिक स्पिंस्टर, जो स्टमक में फूड की एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करेगा.
देन अनदर इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर इज रूगे. रूगे हमारी फोल्डिंग्स हैं विच आर प्रेजेंट ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द स्टमक, और ये हम आगे डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट वॉल लेयर्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. वहाँ हम रूगे के बारे में डिस्कस करेंगे. देन द नेक्स्ट पार्ट इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन. अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो इसका डायामीटर स्मॉल होने की वजह से इसको स्मॉल बोला जाता है, ऑल्दो दिस इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल, एंड इट इज़ हैविंग 3 मेन पार्ट्स, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम. सो इसके लिए एक बार क्विकली यहाँ लेकर आती हूँ. दिस सी शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज़ इमीडिएटली अराइजिंग फ्रॉम द स्टमक, इसको हम डिओडिनम बोलते हैं. मिडल पार्ट को जेजुनम और फाइनली एंड पार्ट को जो है इलियम बोला जाता है. दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ योर दैट योर स्मॉल इंटेस्टाइन. सो डिओडिनम हमारा सी शेप्ड स्ट्रक्चर है, एंड द पेनक्रिएटिक बाइल एंड द हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट दैट ओपन इनटू दिस. ठीक है, हमें पता है कि यहाँ पर जो है पेनक्रिएटिक और बाइल जूसेस की जो सिक्रीशंस है वो थ्रू द हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट यहाँ पर रिलीज की जाती है. Next part is the jejunum, that is the middle part, and finally the ileum is a highly coiled part which opens into the large intestine. This is just only the parts. The mechanism of digestion we will discuss in the next video. Now the next part of the alimentary canal is the large intestine. अगर हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की, इट इज़ हैविंग 3 मेन पार्ट, सीकम, कॉलन एंड दी रेक्टम. सो एक बार हम डायग्राम पर आते हैं यहाँ पर. सो यू कैन सी जो इमीडिएट यहाँ से जब ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो अराइज करती है फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो यहाँ एक हमारे पास कैविटी लाइक एक पाउच हमारा बनता है, उसको हम सीकम बोलते हैं. उसके बाद कॉलन है, ये इसका ये जो है इसकी सेगमेंट्स होती हैं असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड द सिग्मोइड, ये हमारी कॉलन पार्ट आता है. फाइनली हमारा यहाँ पर जो है रेक्टम इज़ देयर एंड अल्टीमेटली एनस इज़ देयर फॉर द एग्जिट ऑफ द फूड. तो अगर हम सीकम की बात करें तो ये हमारा सैक लाइक स्ट्रक्चर है. मैंने अभी कहा कि जो जैसे ही हम स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज में शिफ्ट करते हैं तो वहाँ एक छोटा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर मिलता है विच इज़ कॉल्ड एज दी सीकम. अब सीकम इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट कंटेन्स दी सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हमारी जो स्टमक के जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द सीकम पार्ट, जिसको हम गुड फ्लोरा भी बोलते हैं. बेसिकली ई कोलाई इज़ देयर फॉर दी गुड हेल्थ ऑफ आवर बॉडी. देन दिस ऑल्सो कंटेन्स दी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हमने 10th में भी पढ़ा है. ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है. वेस्टिजियल का मतलब होता है जो ऑर्गन्स विच वर एक्टिव इन आर एंसेस्टर्स एंड दे आर इनएक्टिव इन आर बॉडी. अगर हम अपने एंसेस्टर्स की बात करें तो वर्मीफॉर्म का जो रोल था वो डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज में था, बिकॉज दे वर इन अ हैबिट टू कंज्यूम दी अनकुक्ड प्लांट मटेरियल. और अब हम लोग जो हैं वी आर इन अ हैबिट टू कंज्यूम द फूड आफ्टर कुकिंग. सो जो ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है इट इज़ नॉट फंक्शनल इन आर बॉडी. फाइन, सो दिस इज़ अटैच्ड ओवर हेयर. इवन समटाइम्स आपने शायद अपेंडिसाइटिस एक डिजीज़ है उसका सुना होगा, दैट मीन्स इन्फ्लामेशन इन द vermiform appendix. So in that case we remove the appendix from the body of the person as it is useless for our body. Next is colon. कॉलन जो है ये 4 सेगमेंट्स में डिवाइड होता है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, सिग्मोइड एंड डिसेंडिंग. वो मैंने आपको अभी बताया था यहाँ पर कि हमारी यहाँ पर जो है इसके 4 सेगमेंट्स हैं. असेंडिंग पार्ट है, देन हमारे पास ट्रांसवर्स पार्ट है, डिसेंडिंग पार्ट है और यहाँ एक सिग्मोइड कर्व इसकी होती है. तो ये हमारा जो है दैट वन इज़ दी पार्ट ऑफ दी ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन. कॉलन पार्ट है. लास्ट हमारा पार्ट आता है रेक्टम. सो रेक्टम वी नो दैट इज़ द फाइनल सैक और द बैग वेयर द अनडाइजेस्टेड food or the waste will be collected and finally that will be expelled out through the anus. So this is all about the different parts of the human alimentary canal. Thank you.